Hello friends, welcome to Sanket Group of Coaching. I am Sanket Purohit. Today we are going to continue chapter number 5, Social Science Movement Towards Independence, in which we will be seeing mostly from topic number 5 to topic number 10 depending on how much it's the length. Okay, so let us begin with Gandhi-Irving Pact. Okay बच्चों? So बच्चों, up till now we have seen about Dandi Yatra and everything. So now we will be watching your Gandhi-Irving Pact and Round Table Conference and Moratorium of Satyagraha. Okay, please pay attention. Gandhi-Irving Pact, Round Table Conference and Moratorium of Satyagraha. Gandhiji was called upon by the Britishers for the Round Table Conference related to the constitutional structure and reforms. First Round Table Conference was held, but with the absence of Congress leaders, it was futile. So, गांधी जी को बुलाया गया था इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एज अ इंडियन मेंबर. जैसे हम लोगों ने आगे भी देखा था, पहले नेहरू कमेटी में क्या हुआ था, एक भी इंडियन मेंबर्स नहीं थे, ठीक है. उसके पहले साइमन कमीशन में भी वैसा ही हुआ था. सो इस बार जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तब गांधी जी को बुलाया गया था, लेकिन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कांग्रेस लीडर इट वाज फ्यूटाइल. मतलब जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो वेस्ट हो गया था. ओके. To reconcile with Congress, a pact between Gandhiji and Irwin was made, which was known as Gandhi-Irwin Pact, March 1931, in which permission of free collection or manufacture of salt by persons near the sea coast and permission of peaceful picketing were the main points. Okay. So ये गांधी इरविन पैक्ट सेकेंड टाइम जब वो लोग आपस में मिले, गांधी और इरविन जी, ठीक है, तो वो लोग, ठीक है, आपस में एक पैक्ट बना लिया. मीन्स वन ट्रीटी वाज साइन इन विच देयर वाज अ ट्रीटी दैट सॉल्ट कलेक्शन जो होगा वो फ्री होगा, उसके ऊपर कोई भी रेवेन्यू नहीं देगा, और साथ साथ उसका जो पिकेटिंग रहेगा वो भी एब्सोल्युटली फ्री रहेगा. ठीक है, नॉट टू पे एनी काइंड ऑफ टैक्सेस वाज गांधी इरविन पैक्ट. Okay. In the second Round Table Conference, Gandhiji was the only representative from Congress, and Britishers had discriminating points for various religious committees, to which Gandhiji was deeply disappointed, and therefore the conference was dissolved. जब दूसरी बार हुआ था तब क्या हुआ, गांधी जी अकेले कांग्रेस के लीडर थे और ब्रिटिशर्स ने जो पॉइंट्स दिए थे अबाउट कम्युनिटीज एंड एवरीथिंग, तो उसमें गांधी जी को बहुत बड़ा शॉक लगा, और वो शॉक के कारण उन्होंने ही ये पूरा सेकंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था वो डिसॉल्व कर दिया था. ठीक है. Quit India movement. Keeping in mind the World War situation, the Congress Working Committee decided to end the individual satyagraha, January 1942. The British government attempted. ये याद रखना, 1942 में स्टार्ट हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसको हम लोग इन हिंदी ऐसा बोलते हैं भारत आंदोलन छोड़ो. ठीक है, या भारत छोड़ो आंदोलन, सॉरी. तो ये आंदोलन में हुआ क्या था, वी डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिशर्स, एंड इन 1942 द एजिटेशंस वर स्टार्टेड विथ पीस एंड नॉन वायलेंस. ओके. So the British government attempted to deceive the people of India by Cripps mission, लेकिन वो भी क्या हो गया था, फेल हो गया था. फिर उन लोगों को पता चल गया कि अब जो इंडियंस है वो ज़्यादा देर तक दबे नहीं रह सकते हैं अंडर द clutches of British government. Okay. Deceive people of India by Cripps mission. So Indians were angry and dejected. Therefore, people of India no longer had faith in the British rulers. They assumed that the British did not wish to quit India. Gandhiji advised the people to come out of despair and be prepared to give a new and last fight. On August 9, 1942, resolution of Quit India movement was passed in the Working Committee of Congress,
held at Mumbai. So Gandhiji and with other Congress workers, they have decided to address people of India, and they have addressed that this is the last fight which we are going to do against Britishers. Last fight means again with non-violence. So on 9th of August 1942, Quit India movement का जो agitation था, that was started, and जो वो हुआ था, जो मीटिंग कांग्रेस की, वो कहाँ थी? इन मुंबई. ओके. On the second day of the resolution, Gandhiji, Vallabhbhai Patel, Jawaharlal Nehru, Maulana Azad, and other eminent Congress leaders were arrested. Newspapers were banned. Regional and district level Congress leaders were arrested simultaneously. So, जिस दिन क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई, उसके दूसरे ही दिन बड़े बड़े लीडर्स को क्या हो गया? ठीक है, पुलिस स्टेशन में डाल दिया गया था. मोर ओवर जो न्यूज़पेपर थे, रीजनल न्यूज़पेपर्स थे, अलग अलग रीजन्स के मेजर लीडर्स थे, सबको जेल के अंदर डाल दिया गया था, ताकि जो प्रोपागेंडा बढ़ा सके, ठीक है, अबाउट क्विट इंडिया मूवमेंट, वो दब जाए. ठीक है, इसलिए ये सब मूवमेंट्स ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट कर दी थी. Arrest of Gandhiji and other leaders resulted in nationwide strike, and to this Gandhiji said, "This is the last fight in my life, and therefore people of India should make all attempt to achieve independence." So, from jail also he directed people that ये अपने इंडिया के लिए मेरी खुद की लास्ट फाइट है, क्योंकि मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन आई नीड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया. सो ऑल द पीपल आर रिक्वेस्टेड टू कम यूनाइटेडली एंड फाइट अगेंस्ट इट. एंड उसकी वजह से पूरे देश में क्या हो गया? स्ट्राइक होने लगी. स्ट्राइक मतलब कुछ भी काम करने के लिए दे आर नॉट बाउंड टू डू इट. बस जो भी अगर ब्रिटिशर्स हम लोगों को ऑर्डर्स देते थे एज एन इंडियंस, तो और इंडियंस क्या करते थे? सिंपली दे डू नॉट वर्क, दे स्ट्राइक अगेंस्ट इट. ओके. He gave the slogan, "Do or die." और फिर एक स्लोगन दे दिया, ठीक है, मरो या तो मारो. ठीक है, या मारो नहीं तो मरो. Strikes during Quit India movement. The rural and urban regions of the country, including workers, farmers, youth, students, teachers, businessmen and women, were in the forefront of this movement. और कौन से स्ट्राइक स्टार्ट होने लगी? तो सारे वर्कर्स, फार्मर्स, यूथ, ठीक है, टीचर्स, बिजनेसमैन, सब ने क्या कर दिया? स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया. अब ये सब अगर स्ट्राइक करते हैं, विमेन स्ट्राइक करती है, तो सब कुछ बंद हो जाता है ब्रिटिशर्स के लिए. ओके. Workers went on strike in factories. Iron factories in Jamshedpur and cotton mills at Madras too were on strike. 1 lakh mill workers of 75 cotton mill industries in Ahmedabad went on peaceful strike for 105 days. Almost 3.5 months तक स्ट्राइक चली. Almost 3.5 months, 105 days, 90 days पे 3 महीने खत्म होते हैं, उसके ऊपर 15 दिन और पीसफुल स्ट्राइक. ऐसा नहीं कि हम लोगों ने मारामारी कर ली वगैरह वगैरह. नॉन वायलेंटली दे वर डूइंग स्ट्राइक्स. ठीक है, और इसकी वजह से अब ब्रिटिशर्स को रियलाइज होने लगा था कि आवर पावर ऑन इंडिया आर गोइंग टू लूज नाउ. Colleges and schools observed strike. For nearly 3.5 months, markets in Ahmedabad were closed. Harmful activities during Quit India movement. Anger against British government was being expressed from every nook and corner of the country. Suppression against peaceful people by the Britishers led to a violent situation, as people not only ransacked the post offices, telegram departments, police stations, railway stations, government buildings, school and college buildings, railway lanes, pools, bridges and roads, but looted the assets and set on fire the government properties. So, ये एजिटेशंस इतने बढ़ने लगे कि लोगों का ब्रिटिश गवर्नमेंट से भरोसा उठ गया. सब
कुछ तोड़ फोड़ डाला और लूटना भी चालू किया। गवर्नमेंट एसेट्स को लूट लिया था, या आप लोगों ने काकोरी लूट केस वगैरह सुना होगा, या सेकंड थिंग ये जो चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था जिसमें 21 पुलिसमैन वर किल्ड, ठीक है, ये सब स्टार्ट होने लगा था। रेलवे लाइन्स तोड़ दिए, पुल्स तोड़ दिए, ब्रिजेस तोड़ दिए, रोड्स तोड़ दिए, टेलीग्राम्स वगैरह सब तोड़ दिए। तो इतना सब गुस्सा हो गए थे कि ये जो थे दे आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। In this, railway incurred the heaviest losses. In many of the areas, people used bombs. Failure of the government in crushing the struggle. फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे ब्रिटिश का फेलियर हुआ है इन क्रशिंग द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, Government tried to suppress the movement with hard hand. The struggle started from a small end to a large extent by ransacking government system. More than 70,000 people were imprisoned. 538 gunshots were fired. 1,028 people lost their lives. So more than 50,000 या 75,000 को तो जेल में डाल दिया, बाकी लोगों को मार दिया गया। फिर कितने इंजर्ड हो गए? 1028 तो मर ही गए एंड 3200 पीपल वर इंजर्ड। ठीक है, ये सबको ये मर्सीलेसली दे स्टार्टेड बीटिंग ऑल द इंडियंस, ठीक है, जस्ट टू सप्रेस क्विट इंडिया मूवमेंट। 3,200 people were injured. Students were injured in gunshots, especially in Ahmedabad and Patna. A unique political consciousness was created among the people. This movement gave clear warning to the British government and a message to the world at large that India cannot be enslaved anymore. और ये सारी सप्रेस करने के बावजूद भी एजिटेशंस वर कंटिन्यूड एंड कंटिन्यूड। सो ये क्लियर कट मैसेज था टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, नॉट ओनली इन इंडिया बट ओवरऑल वाइड वर्ल्ड, दैट इंडिया कैन नॉट बी एनस्लेव्ड एनी मोर। मतलब अब इंडिया को क्लचिस में, अपने क्लचिस में नहीं रख सकते हैं। इंडिया विल गो एंड डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। The struggle really signaled by the people of India to Britishers to quit India. The people of India now wanted full independence. The amendment for Dominion status was almost invisible by this struggle. After a struggle of 5 years, India achieved independence. And 1942 से स्टार्ट हुआ था एंड 1947 15th अगस्त को क्या हो गया था? वी गॉट इंडिपेंडेंस। ओके, Azad Hind Fauj and Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose was born in Cuttack in Orissa state, 23rd January 1897. ना अब एक आउटसाइड टॉपिक जो है सुभाष चंद्र बोस, ही इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, उन्होंने भी बहुत सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज की थी इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड द इंडिया। और उनका बॉर्न कहाँ हुआ था और कब हुआ था? 23rd January 1897 इन ओडिशा विच इज इन कटक। ओके बच्चों, His father, Rai Bahadur Janakinath Bose, was a government lawyer in British judiciary. His mother, Parvati Devi, was a philanthropist. So, इनके जो पिताजी थे वो गवर्नमेंट के लिए लॉयरशिप करते थे, ठीक है, LLB किया हुआ था। एंड उनकी जो मदर थी वो फिलेंथ्रोपिस्ट थी। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है लिटरेचर वगैरह लिखना। ओके, Prediction was that this Bengali lad will become sincere servant of Britishers. और सब प्रेडिक्ट करने लगे कि ये छोटा बच्चा जो है अब सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स के लिए काम करेगा, लेकिन that proved to be wrong because he became the number 1 active revolutionary of his time to make India free from British clutches. But he went on to become a staunch freedom fighter against British Empire. After passing examination with good marks from Calcutta's Presidency College,
He went to England for further studies. He passed the very difficult एग्जाम ICS इंडियन सिविल सर्विस. ओवरऑल इंडिया में उनका 4th रैंक था. ES Indian Civil Service examination at 4th number and returned to Calcutta. Seeds of revolution were planted in his mind due to the insulting attitude and pride of the British professors at the Presidency College towards the Indians. ठीक है, तो उनके दिमाग में ये बदला लेने की, रिवेंज लेने की तब से ठानी गई थी जब उनका इंसल्ट हुआ था बाय द प्रोफेसर्स टुवर्ड्स नॉट जस्ट उनका लेकिन टुवर्ड्स ऑल द इंडियंस. तब से उन्होंने दिमाग में ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, ही विल नॉट सर्व ब्रिटिश गवर्नमेंट. ओके. He was very much interested in the Indian independence struggle. He became an active member of National Assembly. He joined the Swaraj Party in 1923. He soon became a very popular leader among youths. He was in the top in the civil disobedience movement and therefore jailed many times. So he has leadership quality. तो 1923 में उन्होंने स्वराज्य पार्टी ज्वाइन कर ली and after joining स्वराज्य पार्टी वो यूथ के एक रोल मॉडल बन गए और वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के भी बहुत बड़े मेंबर रहे हैं. इसीलिए उनको बार बार क्या हुआ था, जेल में जाना पड़ा था. ओके. At the young age of 41, he was elected as president of Congress Convention at Haripura, Surat, and showcased his ability. And due to his leadership, he became the president in हरिपुरा. ठीक है, जो अपने सूरत का ही एरिया है, मैदरपुरा के बाजू वाला एरिया. ठीक है. He left the Congress as difference of opinion with Gandhiji had increased, and he established a party, the Forward Bloc. To awaken plebiscite against Britishers, he travelled most of the regions of India. सो गांधी जी के साथ उनके मतभेद होने के कारण से उन्होंने क्या कर दिया, कांग्रेस छोड़ दिया और अपना खुद का एक पार्टी बना दिया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक. और वो फॉरवर्ड ब्लॉक को और बढ़ावा देने के लिए वो अलग अलग रीजन्स ऑफ इंडिया में देखने गए कि क्या क्या लोगों को दिक्कतें आ रही है, क्या क्या लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है. और इसकी वजह से ही ट्रैवल्ड मोस्ट ऑफ द रीजन्स ऑफ इंडिया एंड टू एस्टैब्लिश power of his started party which is known as Forward Bloc. Okay. He was arrested under Indian Defence Code and imprisoned. During imprisonment, he was ill-treated. मतलब वो बीमार नहीं थे, उनके साथ बहुत ही गंदा व्यवहार हुआ था. ठीक है. और इसीलिए वो बीमार हो गए और बीमारी के कारण क्या हुआ, उनको अपने ही घर में शिफ्ट कर दिया गया था. लेकिन उनकी हेल्थ इतनी डिटोरिएटेड थी कि वो अपने घर पे ही रहे एंड उनके ऊपर 24/7 जो था वो पहरा रहता था ताकि वो कहीं इधर से उधर भाग ना जाए. ठीक है. लेकिन हुआ क्या, एक दिन अगर चांस मिलने से ही उन्होंने अपना पूरा जो फेस का जो हम लोग बोलते हैं ना बहरूपिये बन के इंडिया से फिर वो फरार हो गए. आउटसाइड इंडिया जर्मनी गए और वहां से उन्होंने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी. ओके. Present at his place of residence as his health was deteriorating since he was fasting unto the death. He travelled in the disguise of Pathan from Calcutta via Peshawar, Kabul, Iran and Russia. Later on, he reached Berlin, Germany, 28th March 1942. So, ठीक है, पठान के रूप में यहाँ से गए पेशावर, पेशावर से काबुल, काबुल से ईरान, ईरान से रशिया एंड रशिया से बर्लिन विच इज जर्मनी. ठीक है. और वहाँ से अपना रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट की फ्रॉम 28 मार्च 1942. Indians living in Germany gave him a warm welcome. He urged the people of India through Berlin radio to fight against British Empire. He also met Hitler in Germany and discussed in detail about the independence of India. So,
वहाँ से बाहर से भी उन लोगों ने, बाहर के रहने वाले इंडियंस जो थे जर्मनी में सेटल हुए थे, उनके साथ भी उन्होंने क्या किया, एक रेडियो पे अनाउंसमेंट किया टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। मोर ओवर इन जर्मनी ही मेट मिस्टर हिटलर, ठीक है, फॉर एंड टॉक्ड अबाउट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन डिटेल। एंड देन जर्मनी के हिटलर ने फुल सपोर्ट दिया था टू मेक इंडियंस फ्री, ठीक है। He then went to Rome and Paris to establish military unit for the independence of India and recruited 3,000 Indians. Ras Bihari Bose, a revolutionary living in Japan, chained all the organization and established Indian Independence League. बाहर जाके एक और पार्टी बन गई जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, IIL, ठीक है। और वहाँ के भी जैसे ही रास बिहारी बोस ने ये स्टार्ट किया, धीरे 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 सुभाष चंद्र बोस वहाँ के क्या हो गए, मेंबर बन गए, प्रेसिडेंट बन गए। इसीलिए हर एक लीडरशिप की क्वालिटी के वजह से उनका जो नेम है, जो पेट नेम है, वो बन गया नेताजी। इसीलिए उनको बोला जाता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। To make India free, Azad Hind Fauj was set up. A presence of 100 Indian delegates from Malaya, Japan, Sumatra, Java, Hong Kong, Borneo, Andaman, Burma, Bangladesh, now Myanmar, were in the organization. तो अलग देशों से 100 लीडर्स को लिया गया या बताया गया कि स्टार्ट एजिटेशंस अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट टू फ्री अप द इंडिया, ठीक है। And in that, Mohan Singh, a war prisoner arrested by Japan, was also present. Moreover, Ras Bihari Bose voluntarily retired as head of INA. Azad Hind Fauj and Indian Independence League. After breaking the tight British security, Subhash Chandra Bose cleverly reached Japan from Berlin in a submarine in 1943. So, जर्मनी से भी वो निकल गए इन सबमरीन और पहुंचे जापान in 1943। उनको भी चकमा दे दिया इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद, ठीक है। Moreover, Ras Bihari Bose of Indian Independence League invited Subhash Chandra Bose to be the head of this league. So, Indian Independence League के भी हेड बने और वो ऑलरेडी हेड तो थे ही INA के, that is Indian Nation, that is आजाद हिंद फौज, ठीक है। Japan would provide every kind of help for the Indian freedom. और फिर जापान का भी सपोर्ट मिला, जर्मनी का सपोर्ट था विद हिटलर, एंड जापान का भी सपोर्ट मिला फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो जापान ने क्या किया, जापान ने बहुत सारे इंडियन प्रोविंसेस को कैप्चर कर लिया जानबूझ के टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश। वो लोग ने क्या किया, जापान ने इंडियन प्रोविंसेस को क्या कर दिया, कैप्चर कर लिया एंड देन हैंडेड ओवर टू इंडियन गवर्नमेंट। वैसा It was promised that as Japanese army advances towards India, capturing Indian provinces, provisional governments would be formed and Japan would give them recognition. On July 2nd, 1943, Subhash Chandra Bose went to Singapore from Japan, and there he was elected as the president of Indian Independence League on July 4th, 1943. और फिर जापान से चले गए सिंगापुर और वहां पे इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के वो मेंबर बन गए ऑन 4th जुलाई 1943। Moreover, Ras Bihari Bose voluntarily retired as head of Indian National Army or Azad Hind Fauj and appointed Subhash Chandra Bose as head of INA. Indians residing there got a proper and able leader for freeing their motherland. Since then, Subhash Chandra Bose was called Netaji. Because of his In his speeches and on radio, he gave slogans, Chalo Delhi. और उन्होंने कौन से स्लोगन्स दिए थे ऑन रेडियो? वन इज चलो दिल्ली एंड सेकंड तुम मुझे खून दो मैं तुमको आजादी दूंगा। Let's march to Delhi and तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। Give me blood and I will give you freedom. With his skillful guidance, he formed the parallel government.
He tried to convince and urged the Indians residing in Southeast Asia to sacrifice everything for the struggle of independence of India. और सिंस देन वो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में गए, सबसे रिक्वेस्ट की ऑल द इंडियंस रिसाइडिंग इन दिस साउथ ईस्ट एशिया। वहां पे जाके उन्होंने क्या बताया कि जस्ट sacrifice everything but make India free from the clutches of Britishers. Okay. Establishment of provisional government by Subhash Chandra Bose. Subhash Chandra Bose formed provisional Indian government and he became its prime minister. He allotted other departments to his companions and formed a cabinet. So वो उन्होंने एक पैरेलल गवर्नमेंट जैसा बना दिया था, ठीक है, आउटसाइड इंडिया, और वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए। उन्होंने अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर्स को चुना गया अपने हिसाब से जो स्किलफुल थे उन लोगों को, ठीक है। This government was recognized by Japan, Germany, Italy, nationalized China and Burma. This government recognized Hindi as a national language and tricolor as national flag. और ये गवर्नमेंट जो उन्होंने बनाई थी वो अलग अलग देशों में एक्सेप्ट की गई थी, और ये भी एक्सेप्ट किया गया था कि अपनी नेशनल लैंग्वेज जो है वो हिंदी रहेगी और अपना जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, वो ट्राई कलर का रहेगा, दैट इज सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन। It was decided to have income by assisting Japan, independent role, and by property tax. Netaji visited Andaman and Nicobar Islands and named it as Shaheed or Martyr and Swarajya or Independence. So वहाँ गए और ये अंडमान निकोबार आइलैंड का नाम रख दिया गया था शहीद स्वराज्य। शहीद स्वराज्य मीन्स मार्टियर इंडिपेंडेंस। ओके, Last step and martyrdom of Subhash Babu. In May 1944, under the leadership of Netaji, his military units captured Rangoon, Kohima, presently the capital of Nagaland. Then it marched towards Impal, now capital of Manipur. But after the dropping of two... So, जापानीज ने जैसे प्रॉमिस किया था, दे स्टार्टेड कैप्चरिंग द प्रोविंसेस ऑफ ईस्ट इंडिया एंड गोइंग टू हैंड इट ओवर इंडिया। लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम अमेरिका ने 2 एटॉमिक बॉम्ब जो प्लान किए थे ऑन 2 सिटीज ऑफ जापान, हिरोशिमा एंड नागासाकी, वो जापान खुद पुअर हो गया, इसीलिए जापान अब इंडिया की कोई हेल्प नहीं कर सकता था। 2 atom bombs at Nagasaki and Hiroshima in Japan, the financial assistance to the provisional government stopped. British aircraft started warfare against Azad Hind Fauj, and so the condition became critical. On August 18, 1945, ये भी याद रखना, on August 18, 1945, he started from Taipei airport for Tokyo, वापस जापान जाने के लिए निकले थे। He started from Taipei airport of Formosa for Tokyo, Japan. But his plane caught fire and he got serious burns, and while undergoing treatment, he died. ऐसा लोगों का The mystery of his death has remained unsolved till date. ऐसा लोगों का मानना है कि वो जल के मर गए थे, ठीक है, लेकिन उनकी जो मरने की जो हिस्ट्री है, ठीक है, वो स्टिल अनसॉल्व है, ठीक है, टिल डेट द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ रिमेन्स अनसॉल्व। So that's the end of our second session of chapter number 5. Today we are ending this topic over here only. Tomorrow we will be finishing your chapter number 5. I am Sanket Purohit from Sanket Group of Coaching. Please do like, share, comment and do not forget to subscribe my channel. Thank you very much. Bye bye bachcho.